अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू वेल। दिस इज़ अलीना बेग। आज हम एएसी पे बात करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ऑटिज़म के साथ जिनको स्पीच डिले का इश्यू होता है या मिनिमल स्पीच होती है या बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ी-सी रिलक्टेंस शो करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि एएसी डिवाइस अगर उनको दे दी जाएगी तो शायद उनका बच्चा सारी ज़िंदगी बात ना कर सके। तो आज एक तो हम मिथ्स को ब्रेक करेंगे, साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन डिवाइसेज़ को प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ अगेन फरीहा मुजाहिद मौजूद है। शी इज़ द हेड ऑफ स्प्राउट रिसोर्स सेंटर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग फरीहा। You're welcome, Alina. It's a pleasure to be here. अच्छा, so let me first slide बिल्कुल आपने कर दिया ना Alina? Okay. अच्छा, so today we're going to talk about augmentative and alternative communication. And before we start, let me just give everybody a brief introduction about myself. I am an integrative psychotherapist. I've been working with children and adolescents since 2010. मेरी ग्रेजुएशन जो है वो साइकोलॉजी में है, एंड देन आई फर्दर स्पेशलाइज्ड इन साइकोथेरेपी, एंड माय साइकोथेरेपी ट्रेनिंग हैज बीन फ्रॉम CPCAB UK. I've been running Sprout Resource Center since 5 years now. So 2019 May we started working and developed the setup for Sprout Resource Center. And one of the reasons for doing that was also because I felt that there was a dire need for neuroaffirming practices within Pakistani community, and I feel like कि बहुत सारे जो general traditional approaches hote hain, they are not very helpful when we're working with neurodiverse individuals. The way we understood individuals with neurodevelopmental conditions, let's say 10-15 years ago, has really evolved over time and has really changed all over the world. And I really felt that through Sprout, that's what I wanted to do, that I wanted some of these practices to be available in Pakistan as well, which kind of resulted in this starting off. So, आगे कर लें Anina, let me just start with AAC. So today we're going to talk about AAC. Um, AAC includes any tools, devices, कोई भी strategies, anything जो कि support करता है speech को और spoken language को. इस और बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि AAC particularly refers only to speech devices, but that is not true. AAC किसी भी तरह की ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि ओरल स्पीच के अलावा है, जैसे जेस्चर्स हैं, वोकलाइजेशंस हैं, किसी भी तरह के साइंस, इवन साइन लैंग्वेज या कोई भी और तरह की एडेड कम्युनिकेशन. Another thing that's really important about AAC is कि वो मल्टी मोडल होती है, मतलब कोई भी तरह का AAC के अम्ब्रेला के अंदर आप किसी भी तरह का जो है वो मोड यूज़ कर सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, वो AAC के अम्ब्रेला के अंदर आता है. Or generally, AAC is something that is very useful for any person who cannot rely on speech. या ऐसे इंडिविजुअल स्पीच, जैसे बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनको मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज होती हैं या दे आर डायग्नोज्ड विद एप्रैक्सिया. So for them also AAC is really useful. So anyone who cannot rely on speech some or all of the time, even if they are speaking individuals otherwise, उनके लिए AAC यूज होता है. आगे नेक्स्ट करें. Okay, so some of the individuals जिनके साथ हम generally AAC use करते हैं, एक तो everyone with those with neurodevelopmental conditions. For example, if a child is diagnosed with autism, cerebral palsy, any other intellectual disabilities, उनके लिए भी use हो सकता है. We can also use AAC with, let's say, individuals with Down syndrome or just with speech delay as well, even if there is no other formal diagnosis. Other than that, AAC can also be used with individuals जिनके acquired disabilities होते हैं, like for example कोई traumatic brain injury हो गई है या stroke के survivors हैं who are not able to communicate and use speech a lot, or neurodegenerative diseases जैसे Parkinson's, ALS, इस तरह की कोई भी conditions. Individuals who are hard of hearing, they have hearing impairment या deaf individuals, or those with temporary speech difficulties as well, वो भी AAC use कर सकते हैं. So it's not really limited to a certain condition. And of course, I do want to add कि जैसे आज हम जो AAC cover करेंगे, we're going to cover it more within the context of autism and neurodevelopmental disorders because that is what the group is about.
ओके, सो एएसी के सर्टेन तरह के टाइप्स होते हैं। अनएडेड एएसीज वो होते हैं जिनमें कोई भी तरह का आपको एक्सटर्नल इक्विपमेंट, टूल्स या कोई भी ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल इन जनरल टर्म्स, जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, दैट जैसे जेस्चर्स, पॉइंटिंग, वेविंग, टैपिंग, कोई भी इस तरह की चीज़, मैनुअल साइंस या जैसे साइन लैंग्वेजेस होते हैं, facial expressions are one form of this, body language, vocalizations, ये सब अनएडेड लैंग्वेज में आ जाते हैं और अनएडेड एएसी में आते हैं। एडेड एएसी वो होता है जो कि फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। सो दो टू ऑफ दोज कैटेगरीज आर लो टेक एंड हाई टेक एएसी, जिसको हम अभी आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो अनएडेड कम्युनिकेशन, दिस इज द पार्ट जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये भी एएसी में आता है। जेस्चर्स, कोई भी जो आप साइंस करते हैं, जैसे अक्सर पेरेंट्स से डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा अभी हमारा बच्चा नॉन स्पीकिंग है या वो बहुत लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, बट अगर उनको कुछ चाहिए होता है तो वो हमें वहाँ तक ले जाते हैं, या वो हमारा हाथ आगे कर लेते हैं, या वो हमें इशारा करके बता देते हैं कि ये चीज़ चाहिए। सो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन ऑल ऑफ दिस। फिर कुछ बच्चे हैं जो कि साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं या साइंस वैसे कर रहे होते हैं टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स, और वो छोटे छोटे ऐसे साइंस भी हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर साइन लैंग्वेज से में इंक्लूडेड नहीं है, बट बच्चा उन साइंस को यूज़ कर रहा है टू कम्युनिकेट वट एवर दे नीड टू टॉक अबाउट, जो भी उनकी नीड्स हैं या जो भी उन्होंने बताना है। अनएडेड कम्युनिकेशन और एएसी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है ऑन द यूजर्स ओन बॉडी। सो उसमें जो भी बच्चा यूज़ कर रहा होगा उसको, वो उनके अपने इंडिविजुअल चीज़ें भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल साइंस दैट लाइक आई सेड शुड मस्ट नॉट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी साइन लैंग्वेज। और इसमें बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है, वोकलाइजेशंस भी होती हैं, स्पीच अप्रॉक्सीमेशंस भी होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एक सर्टेन साउंड निकालता है और पेरेंट को जैसे अक्सर पता होता है कि ओ यू नो दिस इज, ये इस तरह तब बात करते हैं जब उनको ये चीज़ चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अनएडेड एज। एंड ऑफ कोर्स फेशियल एक्सप्रेशंस टू, लाइक जो भी इमोशंस और चीज़ें आप बता रहे होते हैं। इन द केस ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स समटाइम्स फेशियल एक्सप्रेशंस डोंट रियली मैच हाउ दे आर एक्चुअली फीलिंग, सो दैट्स अनदर थिंग, बट अदर देन दैट फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनएडेड कम्युनिकेशन। आगे नेक्स्ट करते हैं। Okay, so aided AAC जो होता है, that is divided into two broad categories. जो हम ये ऐसे मेथड्स हैं जो कि कोई ना कोई एक्सटर्नल टूल, मटेरियल या कोई ना कोई रिसोर्स यूज करेंगे। लो टेक AAC is everything that is not relying heavily on, let's say, a device particularly. PEX is one form of AAC, which I'm just going to talk about अभी थोड़ी देर में। एंड कम्युनिकेशन बुक्स जैसे होती हैं, अक्सर बच्चे जो थेरेपी में जाते हैं, यू वुड सी दैट द थेरेपिस्ट्स हैव कम्युनिकेशन बुक्स दैट दे आर यूजिंग, वो भी एडेड एएसी का पार्ट होते हैं। फिर लेटर बोर्ड्स, और जैसे एक जिस तरह आपका क्वर्टी की पैड होता है, इस तरह के लेटर बोर्ड्स आपको बहुत सारे नजर आएंगे, या अल्फाबेट चार्ट्स जो कि जिनको बच्चे पॉइंट कर सकते हैं टू कम्युनिकेट, सो दे पॉइंट टूवर्ड्स दैट एंड द थेरेपिस्ट or whoever is the communication partner is figuring out what letters they are pointing to। ये भी लो टेक एएसी की एक फॉर्म है। और भी किसी तरह के भी राइटिंग और ड्राइंग टूल्स जो हैं वो लो टेक एएसी में आते हैं। One thing that I want to mention here, particularly with regards to PECs, is that a lot of people don't really consider PECs to be a very useful टूल एनी मोर। उसकी रीज़न ये कि जैसे ये लो टेक जितने भी एएसी के टूल्स हैं, इनकी एक लिमिटेशन ये होती है दैट दे, एंड पर्टिकुलरली विद पेक्स, दैट दे टेंड टू गेट वेरी बल्की। सो आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स यूज़ होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, अब जब आप पेक्स, जिनको पेक्स का पता है, वंस यू प्रोग्रेस थ्रू द फेजेस, तो यू कीप एडिंग टू द कम्युनिकेशन बुक। और लो टेक एसी में पर्टिकुलरली पेक्स में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप ज़्यादा आगे जाते हैं एंड दिस चाइल्ड और इंडिविजुअल स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग मोर विद द पेक्स बुक, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि अगर वो उनमें से कोई कार्ड मिसप्लेस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो दैट इन इट सेल्फ इज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज, सो देन इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दैट इंडिविजुअल अगर उनकी इस तरह की कोई इश्यूज आ रहे हों। सो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड।
which brings us to the next form of AAC, which is high tech AAC. हाईटेक एएसी में सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो कि जैसे स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस होते हैं, सम ऑफ दीज नेम्स आई मेंशन हियर, या जैसे टैबलेट बेस्ड एएसी एप्स होते हैं. दीज आर द वंस जिनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा कॉमनली सुन भी रहे होते हैं, जैसे टक चैट है, लैम्प वर्ड्स फॉर लाइफ है, प्रोलोगो टू गो है. फिर टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर भी इसमें आता है और आई ट्रैकिंग डिवाइसेस भी इसमें आती हैं. So eye tracking devices are used mostly with individuals who have motor difficulties, and they track the device through their eyes, and then that is how they communicate. This is again because it is high tech, so it uses a lot of technology based programs and apps. Some of these apps we're going to cover in detail again with respect more towards autism. अभी थोड़ा आगे जाके कुछ बेनिफिट्स जो एएसी के होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो ये फैसिलिटेट करता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट को, और ऑफ कोर्स लाइक जैसे आप हम ये बात करते हैं, लॉट्स ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स आर विजुअल लर्नर्स, एंड बिकॉज दे आर विजुअल लर्नर्स दे आर लर्निंग एवरीथिंग विजुअली. तो एएसी चाहे वो लो टेक है हाई टेक है प्रोवाइड्स अ सॉर्ट ऑफ अ विजुअल इनपुट जो कि ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स देन इन स्पीच प्रोडक्शन. एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एसी के लिए आपको किसी भी तरह का प्री रेक्विजिट स्किल रिक्वायर्ड नहीं है. इवन दो पेक्स इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एसी, बट पेक्स की कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, जैसे आपको थोड़े से प्री रेक्विजिट स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आफ्टर विच यू देन स्टार्ट वर्किंग ऑन पेक्स. बट फॉर मोस्ट एसी आउटलेट्स आपको प्रोग्राम्स आपको कोई प्री रेक्विजिट स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है. यू कैन जस्ट start with modeling it and using it. AAC also helps obviously increase speech production and intelligibility. जिन बच्चों को की speech होती है, they are speaking individuals but their speech is not very clear. It really helps with their intelligibility. उसकी एक reason ये भी है because a lot of these devices they have options जिनमें आप if you click on that symbol then उससे speech generate होती है. So if a child is speaking but not speaking very clearly, it helps with that. Then another major benefit of AAC is that it reduces any sort of pressure or demands of speech production. So we know that a lot of autistic individuals have the vocabulary, they have the receptive language, they have the words to communicate, but उनको motor planning में difficulty हो रही होती है, जिसकी वजह से they are sometimes, if they are really dysregulated or really upset, तो वो अपनी बात नहीं समझा सक रहे होते. So in such situations, it really helps to have a device or any sort of other multimodal communication available, क्योंकि वो उस situation में से demands को reduce करता है, so that automatically then also helps behavior generally. For example, if a child is really dysregulated and they're not able to communicate कि उनको पानी चाहिए या भूख लगी है या they're in pain or anything like that, but they have a multimodal communication available, तो automatically they can use that to communicate, और वो उस situation में से demands reduce करेगा तो meltdowns भी reduce होंगे. Then another benefit is also that ये एक reliable alternate means है for communication, like I just explained right now कि motor planning difficulties में भी ये utilize आप कर सकते हैं. And I think एक चीज़ जो हम अभी आगे cover करते हैं is also कि this is an alternate that you have available. So next slide कर दें अलीना. So important चीज़ें consider करने के लिए ये हैं कि AAC, because it's an alternate method of communication, it should not just be used in therapy. It is very much real life communication. It is just like कि जैसे हम generally speech use करते हैं, we talk to each other. So it's really, really important that if your child is in therapy and they're using AAC, तो it is important कि वो सिर्फ therapy में use नहीं हो रहा हो, वो रियल लाइफ में प्ले टाइम्स में मील टाइम्स में आपके आउटिंग्स में हर तरह के सिचुएशन में आपको अपना एसी का प्रोग्राम वट एवर यू यूजिंग लो टेक हाई टेक यूज़ करना चाहिए. Another thing that's very important is that AAC is just like teaching a child a form of language, right? So in a lot of ways जब आप AAC use करना start करते हैं, so whether you're using a high-tech app or whether you're using a low-tech communication board, you need to model it to the child.
यू हैव टू शो देम हाउ टू यूज इट नेचुरली। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके वर्ड्स को रिपीट करे, तो आप उनके सामने वो वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह एएसी का भी जो आपका मीडियम है और जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो भी आपको बार बार उनको दिखाना है कि इसको कैसे यूज करना है। You cannot just provide a device or an app or a tablet to the child and expect कि उनको खुद ही से सब करना आता हो, or that they will just filter through it, sort through it, and be able to see and use whatever they need. Then another thing that's really important is कि जिस तरह हम words के साथ करते हैं और speech के साथ करते हैं, we need to celebrate all forms of communication. अगर and we need to really honor that communication. So this is something जो कि neuroaffirming therapy के practice में भी we really emphasize on this. Every effort, everything, every gesture is communication. अगर आपका बच्चा आपको आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं और उनको कोई चीज़ चाहिए और वो आपको उस चीज़ तक ले गए हैं, तो ट्रेडिशनल थेरेपी में हम, आई मीन दिस इज हाउ आई वाज टॉट ऑल्सो के, if a child does that, you stop and you pretend like you don't understand and you should try and ask them कि वो चीज़ कहें जो उनको चाहिए. Now what that does is वो बच्चे को और frustrate कर देता है. Now they can see कि आपको समझ आ गया उनको क्या चाहिए. They know that you know what they need and you're still pretending to, to not understand. So that frustrates them more, dysregulates them more, because our kids are smart. They can judge कि हमें समझ आ गई ये चीज़. So we do not need to play down. We just need to honor that communication right then and model what we want them to say. So that's how it works with a lot of Gestalt language processors also, कि उनके साथ भी आपको model करना है what you want them to say. Then, because AAC is a way that children have, it's something that increases accessibility and it's something that helps the child communicate. So it should always be within reach. It should be with you. So even if a kid is attending a therapy center or a school, या अगर आप बाहर कहीं गए हैं प्लेग्राउंड में खेलने, तो जो आपका AAC का डिवाइस है या आपका कम्युनिकेशन बोर्ड है, that should always go with them, because that is going to provide them the modeling to understand कि अच्छा अगर मैं बाहर भी हूँ I can use it, and B, the understanding कि ये मेरे words हैं, like I can use it in whatever setting I am in. Actually I forgot to add it into this presentation, but if you आपने देखा होगा कि in a lot of countries they have these AAC boards, these big visual boards in playgrounds that have lots of symbols on them that are available for accessibility purposes for anyone who needs them. So I wish कि एक दिन ऐसा आए हम पाकिस्तान में भी ये कर सकें. But the purpose for that is to just keep it within reach at all times. फिर एक और चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे ने कोई AAC का अटेम्प्ट किया है, तो दैट इज़ देयर अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट. सो दैट शुड ऑलवेज बी encouraged and responded to. We should never ignore an AAC attempt because it is a huge thing, because उसमें भी बहुत सारे ऐसे motor planning required है where a child has to kind of sometimes go through the symbols and find their symbol, and if they touch it, तो उसको आपको ज़रूर respond करना चाहिए because it's almost as if they said a word. Then, and the last thing that's really important is to be patient and recognize कि हर छोटा छोटा step जो है AAC का वो progress indicate करता है. So every little thing should be acknowledged. अच्छा जी. Now let's talk about some myths and misconceptions. The first thing that anyone says to me जब मैं AAC suggest करती हूँ to the parents also is कि इसका तो मतलब ये है कि अब तो बच्चा हमारा बोलेगा ही. That is not true. That is not going to happen. For sure it's not going to happen, क्योंकि we need to understand कि अगर कोई बच्चों को speech में difficulties हो रही हैं तो वो हमें जानबूझ के तंग नहीं कर रहे. That is the first thing we need to understand as adults, as caregivers, as professionals. वो जानबूझ के वो चीज़ें नहीं कर रहे. They're having difficulty with certain things which is causing that inhibition. They're having motor planning difficulties. They don't have, even if they have the receptive vocabulary, they don't have the ability yet to be able to produce speech. So AAC कभी भी आपके speech को inhibit नहीं करेगा. दूसरी चीज़ ये है कि वो कभी भी आपके स्पीच के इमर्जेंस को रोकेगा नहीं. फॉर एनी चाइल्ड हु इज ऑल्सो इन थेरेपी और नॉट इन थेरेपी बट डेवलपिंग द एबिलिटी स्लोली टू
use speech and to enhance their expressive repertoire, ज़रूरी नहीं है कि AAC को use करने से वो limit हो जाएगा. And this I really want to emphasize on, because ये बहुत सारे लोगों को लगता है with PECs or with AAC के अगर हम कोई ऐसी चीज़ use करेंगे. In fact, I was very surprised to hear also कि you know and I'm just going to give this example क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि for us to understand. So somebody said कि this parent was in Canada, बच्चा 2 साल का था, and they gave them an AAC device, and then the kid वो पाकिस्तान move हो गए, and they took the device away. And they were talking about this कि within 3 months ये बच्चा बोल रहा था, and they were able to develop speech and all of that, and देखा AAC से ये problem हुई थी. Now what we need to understand here is, okay, great, for this kid they were able to develop speech, but the professional who is using it, programming it, और जो apps के अंदर आपके पूरे app को program कर रहे हैं और AAC को use कर रहे हैं, how they use the device is also really important. If you just give the kid the device like a mobile phone and you just don't interact with them at all and you don't respond to their AAC attempts, then it's just a thing that they watch. आप उसको इस चीज़ पे ब्लेम नहीं कर सकते कि AAC did not work because ये चीज़ ही गलत थी. How you're using that device, and that is why it's important to work with trained professionals who know how to do this, who know how to program it, and who are qualified to do this, because they will then tell you how to use it and how to model it. So ये चीज़ ज़रूरी है. Then another thing is कि अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने AAC इंट्रोड्यूस किया तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा to use speech और वो यही सिस्टम यूज करना चाहेंगे. Okay, so here what we need to understand is that a lot of our children will sometimes use AAC and sometimes use their words, and that's okay. अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल नॉन स्पीकिंग है, उनकी स्पीच आ ही नहीं रही, that is a heartbreaking fact, but it happens with a lot of children. It happens that they are not able to develop speech at all, और वो non-speaking ही रहते हैं. We don't know that yet. So if your kid is a younger kid, you don't know that that's going to happen or not. But AAC will still provide them avenues and alternate means for communication. And again, that's not a bad thing. And if your child is somebody who is not non-speaking, उनके कुछ ना कुछ words हैं, they are developing speech, तो AAC उसको inhibit नहीं करेगा और बच्चा हो सकता है कि डिस्ट्रेस के टाइम पे, डिसरेगुलेटेड टाइम्स पे उसको अप्रोच कर ही ले अपने डिवाइस को, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग बिकॉज दैट्स हेल्पिंग देम रेगुलेट देमसेल्व्स इफ दे आर नॉट एबल टू यूज देयर वर्ड्स. सो देन अगेन दैट्स समथिंग दैट्स यूजफुल, और ये एक सबका आइडिया होता है. एंड अगेन आई फील कि अगेन बच्चा जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा कि दे आर नॉट यूजिंग वर्ड्स. Okay, so then another thing that people think is कि ये थोड़ी सी either or situation है या decision है, जैसे either हम speech पे काम कर सकते हैं या हम introduce कर सकते हैं कोई AAC system. ये either or situation नहीं है. It's a tool. It's some resources that you can use which are providing some alternate means to support communication. But they are not tools and resources जो कि आप स्पीच की जगह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पीच प्रोग्राम, बट ऐसा नहीं है कि उससे स्पीच पे काम खत्म हो जाएगा या द थेरेपिस्ट विल नॉट बी वर्किंग ऑन एनी ऑफ दोज गोल्स एट ऑल. Another thing that we need to understand is that, like I said, AAC के कोई prerequisites नहीं है. So you do not need to have any set of skills to be able to benefit from AAC. अगर आप कोई हाईटेक AAC भी यूज़ करें, लो टेक AAC भी यूज़ करें, यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस इट एज पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ विदाउट वरिंग अबाउट इट कि फर्स्ट वी नीड टू डेवलप सिटिंग बिहेवियर और फिर हम AAC इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और फर्स्ट द चाइल्ड नीड्स टू वेट नाउ फॉर या टर्न टेकिंग करने की जरूरत है. ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस AAC एज इट इज़ वेयर एवर योर चाइल्ड इज एट. फिर एक और चीज़ ये है कि स्पीच जनरेटिंग जो डिवाइसेस होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली ओनली फॉर पीपल विद इंटैक्ट कॉग्निशंस. लाइक आई सेड बिफोर कि अगर कोई एक्वायर्ड डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, इफ समबडी हैज़ हैड अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड एनीथिंग, इवन दे कैन यूज एन AAC डिवाइस. देन अनदर थिंग इज़ कि कोई सर्टन एज रिक्वायर्ड नहीं होती. सो इफ पीपल से कि अच्छा a kid is 2 years old or 3 years old and this is too early for AAC, that's not true.
In fact, the earlier you start using it, the better it is, because the earlier you start, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉडल जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा the child is then able to associate your speech to the symbols in front of them. And also because अब AAC में बहुत सारे advancements हो गए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, so you can customize a lot of that, a lot of the apps according to your requirements. जिस जो भी आगे आएगा, next करने. Okay, so before we go to the customizing and some of the AAC apps के हमारे पास options क्या available हैं, one thing we need to understand it that is that AAC is really beneficial for people who are Gestalt language processors. So ऐसे individuals जो कि Gestalt language processing के through language acquire करते हैं. So these are individuals who pick up language in full chunks of sentences. वो एक single word से language build नहीं कर रहे होते. ये वो बच्चे हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे राइम्स या वीडियो क्लिप्स बार बार रिपीट करके देखना पसंद करते हैं, या वो बहुत रिच इंटोनेशन वाला एक सेंटेंस पूरा बोलना शुरू हो जाते हैं, बट वो फंक्शनली इतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते. So hopefully this is something that we can speak about in detail later on, but generally a lot of people would know, a lot of parents would know कि Gestalt language processing क्या होती है. So ऐसे individuals जैसे we have a 4-year-old at the center जो कि is a fan of Peppa Pig. So she is also a Gestalt language processor, and she has picked up a lot of phrases and sentences from Peppa Pig के episodes. So what we've done with her is कि हमने उनके AAC को भी Peppa Pig के ही जो sentences और phrases थे, initially जो हमने उनके communication boards बनाए, they had phrases and sentences and even pictures from Peppa Pig, which then resulted in this कि उसमें she then started saying those words and phrases and incorporating it into her overall general daily life, and it really helped her. So GLP जो बच्चे होते हैं, for them AAC can be really useful because आप उसको उनके प्रोग्राम में और इवन उनके एप्स में भी incorporate कर सकते हो. With this can be used a communication board. Then another thing जिसके लिए AAC बहुत useful होता है, it's not just about what a kid wants, it's also about how they're feeling. So AAC provides an outlet into the internal body sensations of the child. जैसे for example कोई बच्चा बहुत pain में है या बहुत उनको दर्द हो रहा है and they're not able to tell you what's happening, or या उनको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है. A lot of autistic kids also experience temperature differently than a typical person. So बहुत ठंड में भी they are wearing shorts या बहुत गर्मी में भी they like to wear full sleeves. So interoception is our ability to pick up on our internal body signals basically, जैसे temperature, pain, hunger, thirst वगैरह. So AAC then provides that outlet for that individual कि जिससे वो communicate कर सकते हैं. And so in that way it's really connected to sensory also. Now another thing that's really important is कि हम जब भी AAC choose करें, तो जिस तरह हमने ये 3 तरह के types explore किए, it's really important to see कि आपके बच्चे के लिए कौन सा वाला system सबसे ज़्यादा useful रहेगा. For some kids, they thrive on high-tech AAC because they're very fast with technology, they love it, they already know how to navigate devices, and they are really able to pick up on it very quickly. For other kids, it might not be the best option because कुछ बच्चे devices तोड़ भी देते हैं. So they might throw devices a lot, and the apps can get quite expensive. So then you can use a low-tech AAC system, a communication board or something like that. Some kids would not be very keen कि वो visually चीज़ें देखें और वो उनके लिए बहुत overwhelming हो सकती हैं. So in that case उनके लिए science would be better. So different AAC के types जो हैं वो आप different situations में भी use कर सकते हैं. Like for example अगर आप high tech AAC घर पे use कर रहे हैं, but अगर आप बाहर कहीं गए हैं, शादी पे गए हैं, there's कहीं restaurant में and there it doesn't feel like you can use the high tech device, then you can pair them with each other also. Like I said, it's a multimodal communication, meaning आप हर तरह का possible means use कर सकते हैं to communicate. You don't have to stick to one. और लास्ट एक चीज़ ये है ज़रूरी टू चूज़ द राइट AAC. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो आपके थेरेपिस्ट हैं ऑन योर टीम, द स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट दैट यू आर वर्किंग विद, they should be able to collaborate with the parents and find out what is the most effective AAC approach for each person. Some therapists have additional trainings in AAC and some don't, so it would be useful अगर आप
अपने टीम्स के साथ डिस्कस करें. ओके. So here we have a comparison of certain AAC apps. These are some of the most common ones: LAMP, TouchChat, and Proloquo. कुछ के आप जैसे देख रहे होंगे इन दिस कॉलम, सम ऑफ देम ऑफर फ्री ट्रायल्स, जिसमें और कुछ में ऐसा होता है कि आपको 7 days का ट्रायल मिलता है, या देर इज अनदर ऐप कॉल्ड कफ ड्रॉप जिनका 30 days का भी फ्री ट्रायल होता है, और कुछ के फ्री ट्रायल्स के अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं. बट एज यू कैन सी दैट एएसी की जनरल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई हो सकती है, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स वंस यू परचेज द ऐप, so the trial can really help you see if this app would be good for your child and their individual needs. But कुछ की cost काफ़ी high हो जाती है. So these apps have to be bought through those one-time purchases on your tablet, अगर वो आपका जो भी है Apple है, Android है. कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जैसे प्रोलो को टू गो के स्पेसिफिक फीचर्स ये हैं कि इसमें वोकैबुलरी को आप कस्टमाइज कर सकते हैं. दैट इज अ ग्रेट फीचर टू हैव. और इसमें टेक्स्ट टू स्पीच सिंबल की सपोर्ट भी होती है. दिस इज ऑल्सो मल्टीलिंगुअल, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. जनरली हमारे बच्चों के साथ भी वी यूज इंग्लिश क्वाइट अ लॉट बिकॉज स्कूल्स में भी यूज हो रहा होता है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि समटाइम्स जैसे अब उर्दू अगर बहुत ज़्यादा कोई बच्चा यूज कर रहा है, और अगर आप इंग्लिश में कोई एएसी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंग्लिश और उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्क होता है. So this is something that you would have to consider when choosing AAC for your kid. A great advantage of this app is कि ये बहुत ज़्यादा customizable है. इसमें बहुत सारे different boards बने होते हैं जिनको आप customize करके use कर सकते हैं. Features बहुत robust हैं और ये बहुत widely use होता है. But इसकी upfront जो cost है, it is quite expensive. It's $250. It is quite steep. और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है इन द सेंस कि इसको आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है फर्स्ट बिफोर यू इंट्रोड्यूस इट टू द चाइल्ड. इतना इजी, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है. टच चैट की अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिमिटेड फीचर्स आपको फ्री ट्रायल में मिल जाते हैं, एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन द अदर वन. इसमें यह है कि ये आपको वर्ड प्रिडिक्शन भी देता है, सिम्बल्स भी सपोर्ट करते हैं उसके कम्युनिकेशन. सो इसके सिम्बल्स बहुत ईजी टू यूज़ हैं. आप जब उसको देखेंगे तो यू विल सी दैट दे आर वेरी easy to understand. It's a very flexible app and it's good for different age groups. अगर आप बिल्कुल basics से शुरू करें, if the kid is very young, touch chat is a better option than Proloquo to go, in my opinion. But it is also obviously like all apps, it's bit expensive और इसको सेटअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है. But again, I would say that touch chat is much easier to use instead of Proloquo to go. LAMP is also a very popular one, but इनका एक disadvantage ये, they do not offer any free trial, so you have to make the purchase. But जो बच्चों को मोटर प्लानिंग की डिफिकल्टीज होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है. इनका लेआउट बहुत कंसिस्टेंट है और ये स्पेशली डिज़ाइंड है ही फॉर ऑटिज्म, सो दैट इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. जिन बच्चों को मोटर प्लानिंग डिफिकल्टीज हों या एप्रैक्सिया हो, उनके लिए दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. बट ये इतनी ज़्यादा कस्टमाइजिंग ऑफर नहीं करता जितने बाकी ऐप्स करते हैं. Then we also have some of these other options. I'm just going to leave it on here for you all to see. आप इसको देख सकते हैं. I've put together these things जो कि इनके specific features हैं. The other ones I spoke about ये वो वाले थे जो कि ज़्यादा commonly use होते हैं पाकिस्तान में. But some of these are also really popular all over the world. But जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें से ऐसे हैं जो कि easy to handle हैं और कुछ हैं जो नहीं हैं. But you can do this कि आप इनको सबको you go through them and you see किसकी vocabulary आपको better लग रही है, किसकी नहीं लग रही. I always suggest to parents, जब भी आप कोई AAC app consider कर रहे हैं for your child, I would suggest कि आप हमेशा first try the free trial for yourself. Try and program it. आप उसके अंदर देखें, you will find different interfaces and you will find कि हर there are lots of, like in simple words, there's lots of pages that you can look into, right? और फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बेटर है. लाइक फॉर सम किड्स, जैसे मैंने पेपा पिग का एग्जांपल दिया, यू कैन ऑल्सो प्रोग्राम दो सिम्बल्स एंड आइकॉन्स इनटू योर डिवाइस, और आप उसमें अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बच्चे की आवाज़ में भी कर सकते हैं, जो हाईली कस्टमाइजेबल ऐप्स हैं. और आप उसमें जैसे फॉर एग्जांपल पेपा पिग का क्लिप लेकर उसको भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. बट फॉर सम अदर एप्स को इतने ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं होते, एंड यू डोंट particularly for, and maybe for some kid you will not need to customize it as much अगर बच्चे की generalization अच्छी है. So then again, this is something individual basis पे your therapists and your teams can really help you figure out कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट होगा.
Okay, so these are just some of the customizing जो available होती हैं with multiple apps. बहुत सारे ऐप्स में अब जो है वो आपको टेक्स्ट सिंबल्स और स्पीच का आउटपुट मिल जाता है, जिस तरह मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। पहले बहुत सारे ऐप्स ये वाले हमें हमें सिर्फ आईपैड के ऊपर अवेलेबल होते थे। ओवर टाइम विद टेक्नोलॉजिकल अब काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो कि आपको एंड्रॉइड्स पे भी अवेलेबल होते हैं, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव। देन सॉरी, ये टाइपो है, दिस वाज सपोज टू बी टेक्स्ट टू स्पीच। और सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन भी होती है, सो सिंबल्स आर ऑल्सो थिंग्स जो कि हम टेक्स्ट में या वैसे जनरली विजुअल स्केड्यूल्स में यूज कर ही रहे होते हैं, सो आवर किड्स हैव सम फॉर्म ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू इट ऑलरेडी। और फिर आप डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं फॉर ईच यूजर प्रोफाइल। वॉइस कस्टमाइजेशन भी है, एक्सप्लेन टू यू कि बच्चे की आवाज़ में, एडल्ट की आवाज़ में देयर इज अ मेल ऑप्शन, देयर इज अ फीमेल ऑप्शन। Different individuals prefer different things, so it is really useful to have that sort of customization. बहुत सारे apps के grid sizes भी जो हैं वो आप change कर सकते हैं, that is another layout change that is available for most apps. बटन प्लेसमेंट कहाँ रखनी है, आपको ग्रिड का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, दैट इज अवेलेबल। फिर आप कुछ सिंबल्स भी चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज लाइक बच्चे की अपनी फोटोज भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। दीज ऑल ऑप्शंस हैव बिकम अवेलेबल ओवर टाइम, एंड नॉट एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन एवरी ऐप, बट इफ यू गो थ्रू सम ऑफ द वंस जो कि मैंने लिस्ट में ऐड किए, प्लस एक जो मैंने नहीं किया विच वॉज कफ ड्रॉप, यू विल बी एबल टू सी कि किस में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Okay, आगे करना नेक्स्ट। Okay, so that is about it. I just wanted to say at the end कि do not be afraid to try this out, and this will work for some kids and will not work for some kids, but बिल्कुल भी इस चीज़ की वजह से कि oh you know probably this would not be useful for my kid, do not be scared to try it out. Once you do try different apps तो आपके लिए ज़्यादा easier होगा। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि we've had some parents who said कि अच्छा जैसे अभी 30 days का free trial है for something, right, or 7 days का, तो they try and very quickly try and give it to the kid कि अच्छा हम जल्दी से 7 days में देख लेते हैं if we need to make the payment for the app or not. This is not how the kid will learn AAC. It will create even more pressure कि अब they suddenly have to do these things. So you have to take it slow, और जब आपका trial period है उसको utilize करें to just figure out if you think it will be a good fit for your child or not. बाकी I would just like to ask everyone if any questions are coming up. Thank you so much, Fariha. It was really informative. Questions तो as such नहीं है, मुझे कुछ questions इधर text पे receive हुए हैं मोबाइल पे। AAC के थ्रू क्या बच्चे academically improve कर सकते हैं? AAC is essentially meant for communication. So हम्म, बहुत सारे autistic बच्चों के academics already they're quite good at reading and things like that. So okay, indirectly I would say yes, it does aid into it because ज़रूरी नहीं है कि आप symbols use करें. For a lot of older individuals, you can just use the text itself also if they can read. But it is not something that is meant for learning academics. It's something that's meant for communication. okay. एक parent का सवाल है कि क्या कोई affordable apps हैं जो कि वो use कर सकें अगर कोई afford नहीं कर सकता, because डॉलर में पे करना हर एक के लिए easy नहीं होता। काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे भी, सो देर आर अ लॉट ऑफ फ्री एप्स अवेलेबल एज वेल फॉर एसी, हम्म, बट उसमें क्या होता है कि जो ये पेड ऑप्शंस हैं दे आर द वंस दैट ऑफर मोर कस्टमाइजिंग एज वेल। देर हम्म, आर सम फ्री एप्स एज वेल दैट आई विल लिस्ट डाउन ऑन, जब आप ये वीडियो पब्लिश करेंगे आई विल मेक अ होल हम्म, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट एंड आई एड इट ऑन द कमेंट्स। बट फ्री एप्स okay, का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि समटाइम्स वो हैंग होते हैं बीच में, and हम्म, otherwise they don't have offer that much customizing as well. हम्म, ये जो मैं आपको सारी कस्टमाइजिंग बता रही हूँ, ये हम्म, जिस तरह टेबल में मेंशन था कि ये कुछ ऐप्स में होती है और कुछ में नहीं हम्म, होती, बट हम्म, मोस्टली ये पेड ऐप्स में होती है। ओके, ठीक है। अच्छा फरीहा, एक क्वेश्चन मेरा है कि जो एप्स हैं ये डाउनलोड हो जाती हैं आपके टैबलेट पे या एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, या फिर ऐसे होता है कि आपको स्पेसिफिकली कोई डिवाइस खरीदनी पड़ती है जिसके अंदर ये इंस्टॉल्ड होती हैं? नहीं, ये आपकी रेगुलर आईपैड पे हो जाएगी। यू डोंट नीड टू बाय हम्म, अ डिवाइस सेपरेटली, यू नीड टू बाय द ऐप दो। आई कैन सी ओके, सम ठीक है। क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन So, है, कैन यू but प्लीज? you need to buy the app. You don't need to buy any specific device. ओके, किरण खान का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू हाउ टू इंट्रोड्यूस एन एएसी ऐप टू द चाइल्ड, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू यूज ब्रॉडली?
Okay, so broadly, when you're looking for AAC, you first look into this कि जो दो तीन options मैंने आपको बताए हैं, unaided, aided और जो इनके तीन categories हैं, you first figure these out कि अगर for example आपका बच्चा safely device use कर सकता है या नहीं, do you think that they tend to break screens or things like that? If that is the case, हम्म तो फिर high tech AAC आपके लिए इतना useful नहीं हम्म होगा. If that is not the case, and affordability is also not an issue. जैसे these हम्म apps can be expensive. तो फिर अगर इस तरह की चीज़ है तो हाईटेक would be good. अगर आपको लगता है कि affordability issue है, AAC is very new for you and your child, you can just start with a low tech AAC board. Also, I want to clarify कि जब मैं एक low tech AAC board बोल रही हूँ, these are very easy to prepare. They can be prepared by your speech therapist. They can even be prepared by you. You will be able to find lots of these options over the internet as well. You can just print it out and laminate it and place it somewhere that is very common for the kid to use and take it with them wherever they are going. That is what I mean when I say low tech AAC. So it's very easy to use. इसको आपको आई हैव ट्राइड रियली सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज कि आपको इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. सो जब आपने स्टार्ट करना है तो आप इस तरह का लो टेक कोई कम्युनिकेशन बोर्ड बना के बच्चे को उसको एक्सेसिबल करके ट्राई करके देखें, मॉडल करें बार बार. सो वेन एवर दे, फॉर एग्जाम्पल इफ देर एक्सपीरियंसिंग स्टमक एक और आपको पता है कि आपका बच्चा हमेशा पेट पे हाथ रख के उसको दबाता है व्हेन दे आर एक्सपीरियंसिंग स्टमक एक, सो यू कैन शो देम दैट कार्ड, जस्ट पॉइंट टू इट एंड से इट, I feel pain or stomach ache with high intonation. So they would be more inclined to use it. Okay, this is a comment, I believe, Shagufta Jabin ka. Hmm, absolutely. हाँ बिल्कुल it does, हाँ, but okay. again it's not something that what I may understood from that question जो आपने पहले किया था was कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे रीडिंग राइटिंग के एप्स होते हैं, जैसे रीडिंग एग्स होता है, वो इस तरह Mm-hmm. यूजफुल है या नहीं. That's what I understood from that. But yes, that is true. जो शगुफ्ता कह रही है, that is true. A lot of people have used a lot of these methods and even written books through Mm-hmm. these devices and generating apps. बिल्कुल. One of the books I think जो बहुत popular भी है, The Reason I Jump, I believe, is written by somebody who's a non-speaking individual. Okay. Hansa ka question, he's using Avaz Act, AAC, okay. Question क्या अच्छा, है? इससे एक मुझे बात याद आई है। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें उर्दू को इस्तेमाल किया जा सके? बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती और बच्चे को भी कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर उसे एकदम से एक इंग्लिश बेस्ड टेक्स्ट दे दिया जाए। तो क्या ऐसी ऐप्स आपको पता है जो कि उर्दू ज़ुबान में हो, जो कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? फरीहा, आपको आवाज़ आ रही है? I'm sorry, Lee, your connection. ओके। आई वाज़ आस्किंग, अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, अब ठीक है. ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या उर्दू ज़ुबान में कोई ऐसी ऐप्स डेवलप हैं जो कि पेरेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में ज़रा प्रॉब्लम होती है या उनके घर में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया जाता? Hmm. I'm not really aware of any app right now that has been developed in Pakistan, but I can look into it and let you know. But जैसे Proloco to go है ये multilingual options offer करता है. But again जैसे उर्दू में हुँ, हुँ। sentence structure completely change हो जाता है English से. हुँ, So that is something to look into also. बहुत सारे बच्चे उर्दू अंडरस्टैंड तो करते हैं बट रीड नहीं कर सकते. सो सिंबल वाइज बिकॉज हुँ, इट्स अ हुँ। लार्जली सिंबल बेस्ड सिस्टम, हुँ, हुँ। तो वो विजुअल इनपुट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है. बट येस आई एम श्योर देयर वुड बी सम ऑप्शंस, बट आई एम नॉट श्योर. अ व्हाइल अगो, अ फ्यू इयर्स अगो, सम लम स्टूडेंट्स वर डेवलपिंग एन हुँ, हुँ। ऐप हुँ, हुँ। एसी का जो वो उर्दू में बनाना चाह रहे थे, बट आई एम नॉट श्योर इफ दे वर एबल टू अचीव दैट और नॉट. ओके, ठीक है। फरीहा, अंजुम का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एएसी इन चिल्ड्रन हू आर वर्बल बट वेरी इकोलेलिक एंड लिमिटेड कन्वर्सेशन एबिलिटीज़? ओके, सो ये वो है जो हमने अभी जीएलपी में कवर किया था. सो जनरली चिल्ड्रन हु आर एंगेजिंग इन अ लॉट ऑफ डिलेड ecolalia, लार्जली दे आर गेस्टॉल लैंग्वेज प्रोसेसर्स. इन बच्चों के लिए एएसी एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकता है
जिस तरह हम्म मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड दीज आर किड्स हु आर यूजिंग लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ रिच इंटोनेशन, अ लॉट ऑफ, हम्म सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि जब बच्चे डिलेड एक्युलेलिया में एंगेज कर रहे होते हैं, इट इज मीनिंगफुल फॉर देम। So, हम्म since it is meaningful for them, that means कि they're not just saying it. जैसे पहले हमें लगता था कि अगर एक्युलेलिया कोई बच्चा कर रहा है तो वो मीनिंगलेस लैंग्वेज है, doesn't mean हम्म anything, but it does mean something for that individual, चाहे वो literal उस चीज का वही मीनिंग ना भी हो। So हम्म for those kids it is really really useful, and actually उसमें बहुत high success rate भी है। ओके, ठीक है। रमशा जाफरी, शी इज सेइंग आवाज AAC इज अवेलेबल इन हिंदी। But that's Hindi, no? That's not हाँ, Urdu. ओके। थैंक यू सो मच फरीहा, आई गेस हमने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिए। और आई होप ये सेशन जो उनका काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा पेरेंट्स के लिए, ये चूज़ करने के लिए स्पेशली कि कौन सी डिवाइस उनको लेनी चाहिए। और यहाँ पे एकदम से आपने बात की कि अक्सर बच्चे डिवाइसेस तोड़ देते हैं। तो मैंने ये देखा था कि ऐसे कवर्स आ चुके हुए हैं, जो अगर आप टैबलेट्स पे या आईपैड्स पे लगा देते हो तो वो इजीली बच्चा ब्रेक नहीं कर सकता। तो अगर पेरेंट्स को इस तरह के कवर्स चाहिए तो वो अमेज़न पे जाके चेक कर सकते हैं, या पाकिस्तान में दराज़ में चेक करें कि अगर आपको मिल सके, तो आप वो भी That is, ऑर्डर कर सकते तो हो। मैंने पॉइंट इसलिए भी मेंशन किया था रीना, हुँ, बिकॉज़ वी हैड अ स्टूडेंट जो कि डिवाइस अपनी उठा के पंखे में आई फेंक नो, देती बहुत ज़्यादा। तो थी। मैंने सो वो देखा था कवर्ड कि उसमें भी मुश्किल से यूज़फुल करना नहीं था। होते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फरीहा, और इंशाल्लाह कोशिश यू करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको फिर से किसी और सेशन के साथ लेके आएँ। ज़रूर, ओके। इंशाल्लाह मैं एक लिस्ट भी पब्लिश कर देती हूँ अंडर द कमेंट्स। बिल्कुल, ये शेयर कर दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डू यू रिकमेंड दैट पेरेंट्स यूज़ ओनली वन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और उर्दू विद मिनिमल वर्बल या GLP जिन बच्चों को हो? तो एक हुँ। ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या एक से ज़्यादा कर सकते हैं? ओके, सो नॉट नेसेसरली। हाँ। इनफैक्ट रिसर्च भी अब ये प्रूव करती है कि मल्टीलिंगुअल बच्चे या बाइलिंगुअल बच्चों की भी जो लैंग्वेज या स्पोकन एबिलिटी हुँ, होती हुँ। है, उसका उनके मल्टीपल लैंग्वेजेस पे इफेक्ट नहीं होता। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर बच्चा मल्टीपल लैंग्वेजेस मतलब मिक्स एंड मैच करके यूज कर रहा है, जैसे हम पाकिस्तान में भी उर्दू और इंग्लिश मिक्स कर रहे होते हैं, तो वो दोनों ही चीजें उनकी लैंग्वेज कंसिडर होती हैं। हुँ, और अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है दैट लाइक ये रिफ्यूट भी हो चुकी हैं काफी सारी नाउ। इनफैक्ट आई आल्सो हर्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर वो कह देते हैं कि आप बच्चे को सिर्फ इंग्लिश सिखाएं या सिर्फ उर्दू सिखाएं, बट दैट बिकम्स अ रियल चैलेंज। लाइक अगर आप सिर्फ इंग्लिश सिखा रहे हैं तो जब बच्चे सोशल सेटिंग्स में उनको समझ नहीं आ रही उनसे कौन क्या बात कर रहा है। अगर आप हुँ, सिर्फ हुँ, उर्दू सिखा रहे हैं व्हेन दे गो टू स्कूल हाफ द टाइम, मतलब अभी मैं भी आपसे बात करते हुए कितना मिक्स बोल रही हूँ, सो फिर ये थोड़ा सा चैलेंज आता है। एंड ऑल्सो हुँ। रिसर्च सपोर्ट्स इट कि बाइलिंगुअल बच्चे मल्टीलिंगुअल बच्चों को कोई इफेक्ट नहीं होता इफ दे हैव स्पीच डिले, एंड इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता ऑन यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। एब्सोल्युटली। अच्छा फरीहा, हमने अभी तक पेरेंट्स के एंड से और बच्चों के एंड से बात की, लेकिन अगर इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाना हो AAC डिवाइसेस को, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोग यूजुअली फेस करते हैं, और क्या ऐसी स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इन चीज़ों को जो IP बनता है उसके अकोमोडेशन का हिस्सा बना सके? और स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी भी हैं, जैसे अभी शगुफ्ता भी बात कर रही थी कि इंटरनेशनली बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बच्चा अगर बात नहीं भी कर सकता, जैसे ब्रेल दे दी जाती है बच्चों को, तो ऑटिस्टिक बच्चों को अगर ये इस तरह की डिवाइसेस दे दी जाए तो मेरे ख्याल से वो भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा से आप प्लीज अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। जैसे स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस होती हैं, दे आर रियली हेल्पफुल, एंड दैट इज हम्म ट्रू। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हम्म ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन अंडरग्रेड एंड इवन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन जो मुझे लगती है, अगर मैं बिल्कुल रियलिस्टिकली बात करूं, दीज एप्स, बिकॉज हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है, दीज हम्म एप्स टेंड टू गेट वेरी एक्सपेंसिव। So एब्सोल्युटली। even if some, but एक चीज ये है, it is a one time cost, yes, but even then it is quite impossible for a हम्म lot of people to be able to afford it. So हम्म एक ये थोड़ा सा limitation है। Ideally तो हमारे schools, colleges, universities, it's even in our constitution that they should not be denying admission to हम्म autistic individuals or anyone with any developmental conditions. But realistically speaking, I don't think कि लोगों को अभी इतनी awareness भी है to even understand
क्योंकि जैसे when a child or even adolescent is learning how to use this, तो Mhm, उनको response time चाहिए होता है. It takes a while for them to actually mhm, incorporate that and start using it more frequently. So पहले तो we mhm, have to start it from that individual level, and then yes, certainly it must absolutely be a part of the IP for the mhm, child. और ये उनके टूल्स और सपोर्ट्स में एडेड होना चाहिए. काफ़ी सारे बच्चों के उसमें होता भी है, बट हम लार्जली मतलब अगर मैं बिल्कुल ज़्यादा कॉमनली उस चीज़ की बात करूँ तो हम अभी भी ज़्यादा कॉमनली पेक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज अगेन दैट mhm, इज something that is not that expensive to start off with. But I've had students जो कि पेक्स के जब आगे लेटर स्टेजेस पे चले जाते हैं, जब वो फेज 5 और 6 करना शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी इतनी इतनी मोटी पेक्स बुक्स बन जाती हैं. mhm, And mhm. then one part gets misplaced and the child starts getting frustrated. So ऐसे केस में फिर आपको AAC यूज करना, डिवाइस ऐप यूज करना ज़्यादा यूजफुल होता है. Okay, ठीक है. Mariana's she wants to know your institution and contact number. तो वो फिर आप शेयर कर दीजिएगा after the मैं नीचे ऐड session, कर ठीक देती है? Okay. Thank you so much, Fariha. Okay, take care everyone. Allah Hafiz. हूँ. अल्लाह हाफिज.